So we are talking about the development of the hill slopes, and in this, before we again start with the Davis, तीन चीजें अच्छी तरह से याद रखना. किसका क्या होता है इसमें? वर्टिकल डाउन कटिंग. इससे क्या होता है? द एंटायर स्लोप विच इज इनिशियली कॉन्वेक्स, फाइन, gets transformed into a low concave profile. So all the theories, that is the three theories which we are going to deal today, will be talking about the convexity at the top and the basal concavity. That means how the slope will become over the period of time concave by three processes: Davis slope decline, down cutting, then parallel retreat of king, parallel retreat of LC king. He says if this is the slope, how this original slope will decline initially backwards, ओरिजिनल स्लोप ए इज द फर्स्ट कट गया, बी फिर से कट गया, सी फिर से कट गया. अब देर इज नो मोर स्लोप लेफ्ट, सो एंड दिस इज हाउ द स्लोप विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. मतलब अ फ्री स्क्रैप हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू फिर से बेसल कॉन्केविटी. एंड थर्ड, by Penck, in which the entire slope from its original position O will be first brought into position A, फिर in the position B, फिर in the position C, फिर in the position D, E, etc. This is what is the slope replacement. So slope decline, parallel retreat, and सेम है. हाँ सेम है, इसलिए तो किंग इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय पेंक एंड बोथ डेविस दोनों. एंड लास्टली एलसी किंग. हम इसमें जाएंगे और वुड का कंसेप्ट कि इनिशियली देयर इज अ फ्री स्क्रैप, then the sediments will fall from the free scrap, and these sediments will result into formation of rectilinear slope which will be covered by debris, and ultimately the rectilinear slope will give rise to the concave slope, and then this concave slope will increase. ये है wood का concept. मतलब in simple words try to understand what I am saying. फिर let us after we'll complete the topic, you will see how the language of the question is difficult but the question ka concepts are easy. The entire question, entire this portion, we are going to see how the landform is converted from the summit convexity to the basal concavity, or how the slopes are formed. Now because majority of the landform is made up of slopes, majority of the landform being flat or plains, in reality the slopes are concave. So we are all going to deal how the concavity of the slopes are going to form. The processes by which we study this concavity is known as slope analysis. So slope analysis agar kal aata hai, that then what you have to write, either Davis Penck and
this thing. मतलब एक question आता है, write a short note or understand the different models of the slope analysis. Slope analysis means one model of the slope analysis is vertical down cutting by Davis. The another model of the slope analysis is parallel retreat by L.C. King, and the third model of the slope analysis is slope replacement by Penck. Fine. Go home today. अच्छी तरह से समझो इसको, ताकि tomorrow when I give you a Xerox of some of the pages of this book for value addition, geomorphology by Savindra Singh, then you should know what the words are. इतने डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, that is just for reference for value addition. फाइन, वो जो Xerox pages है. बट सबसे पहले अपना क्लास नोट्स. फाइन, वो कब यूज़ करना है? अगर कोई चीज़ें याद नहीं आई तो, या कुछ समझ में नहीं आया तो, या एक्स्ट्रा रीडिंग लेनी है और समझना है तो ही यूज़ करना है. फाइन. सो स्लोप डेवलपमेंट और स्लोप एनालिसिस और स्लोप फॉर्म, स्लोप का फॉर्म मतलब स्लोप का शेप, इज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम. किसकी थियरी लिखनी है? डेविस की. स्लोप डेवलपमेंट passes through sequential development from convex to concavity. किसकी थियरी लिखनी है? डेविस. sequential development मतलब डेविस. फाइन. In the slope analysis, the basal slope grows and replaces the top slope. किसकी थियरी लिखनी है? पेंक की. स्लोप रिप्लेसमेंट. बेसल स्लोप मतलब बेस पे जो स्लोप है, इट ग्रोज एंड इट रिप्लेसेस द टॉप स्लोप. स्लोप रिप्लेसमेंट कीवर्ड क्या है डेविस में? टाइम, सीक्वेंस, यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज, स्टेजेस. इसमें क्या है? इसमें कीवर्ड इज रिप्लेसमेंट. एंड द थर्ड इज स्लोप्स हैव पैरेलल रिट्रीट. एल.सी. किंग नहीं, सेपरेटली नहीं आएगा. फाइन. वुड बिल्कुल भी नहीं, सिवेगार बिल्कुल भी नहीं, यंग डायनामिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं. दैट इज, देयर आर हाउ मेनी थियरीज ऑफ द स्लोप एनालिसिस आर देयर? स्लोप एनालिसिस की थियरीज आर किंग, डेविस, पेंक, द ट्रायो, इंपॉर्टेंट 3 पीपल. उसके बाद वुड, सिवेगार, स्ट्रॉलर, यंग एंड हैक. ये सारी दी है. तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? यंग. सिलेबस में कौन सी है? डेविस, पेंक एंड किंग. सो यंग फिर से, जस्ट लाइक इन द लास्ट लेक्चर वी यूज्ड यंग और हैक फॉर कंक्लूजन, वी शुड बी यूजिंग यंग फॉर कंक्लूजन. फाइन. वंस वी फिनिश टुडेस टॉपिक, सब्जेक्ट बिकम्स इजी अगेन. गेटिंग इट? सो ये 3 है. अंडरस्टूड दिस? स्लोप रिप्लेसमेंट, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? How this entire landform will be converted into a low-lying landform is what is the landform development. When we study the landform development, when we study only one aspect of the slope, it is the slope, hill slope or slope development. Slope development has 3 models. We have started with Davis. Answer won't be as it is. थोड़ा बहुत change होगा. In this you will have to tell why convex slope develops. वहां पे हम कहते हैं V-shaped valleys develop, but V-shaped valleys always will have which slopes? Convex slopes. This is what is the single convex slope can be. Then this convex slope will be becoming concave slope. Stage 2, mature stage. क्यों? Because vertical erosion is replaced by lateral erosion. Stage 3, old age. Vertical erosion totally stops, only lateral erosion is there, and therefore sides are reduced. Because the interflows are reduced, because the water divides are reduced, therefore we say the entire landform becomes convex or concave in origin. Negatives same. अब सिर्फ प्रॉब्लम है वर्टिकल इरोजन से क्या होगा? Why convexity? Convexity तब होती है when soil धीरे धीरे this is my slope, this is my hill, it has cracks, and because these are the rocks, in case there is a heavy rainfall, all these rocks will move down. As it moves down, ऐसे बनेगा. But if this is my slope and धीरे से जाके only this part is getting eroded because of the river or weathered,
only some particles of the soil will be moving down. यहाँ से river will be doing the erosion. यहाँ से river is doing the erosion. यहाँ पे river cannot do the erosion because no river will start at the peak. It will start from the sides. As river is doing the erosion here, the rocks start breaking, and as the rocks start breaking, धीरे से the particles start falling downwards, and these smaller sediments are then easily removed by the river. So the process which applies here is soil creep. What is soil creep? Soil creep, landslide and mud flow are the three types of mass movement. In the soil creep, water is not there, the rocks will break into soil and soil will move very slowly down the slope under the influence of gravity. That is what we know as soil creep. मतलब as you step, कुछ चला, कोई animal चला, if any animal does the grazing, then the soil particles will break down and they will move slowly down the slope, and that is what is the soil creep. In case of heavy rainfall, अगर soil टूटी हुई है, if the soil is broken, if there are sediments, in case of heavy rainfall, sometimes the soil does not move slowly down, it gets mixes with the water and पानी जैसे बहता है वैसे soil moves. That is known as a mud flow. And sometimes when the big rocks fall down, that is known as landslide. हमें देना ही नहीं है landslide पे. हमें सिर्फ इतना याद रखना है, in the first stage, because the rivers are not very big, what will apply in the youthful stage? Soil creep. Because of soil creep, कैसा slope बनेगा? Convex. Due to soil creep, the sediments will be deposited at the bottom of a valley. Then this sediments can be removed by the river, and because the sediments are removed by the river, slope profile keeps on becoming convex, and then जैसे जैसे ये कम होगा, this will get destroyed, concave, and फिर से छोटा. That is, this topic is slightly more tough to understand than the landform development. But before I go, are you comfortable with the three theories we have done? Fine. Did we write anything regarding the slope development of Davis? Basic assumption. So what was the basic assumption first? First you take into stages, mature and old age, and then you take it back in The third basic assumption. Soil creep dominates. Soil creep dominates on the summits or on the tops or on the top of a mountain, on the summits or on the top of a mountain, in the youthful stage, to give rise to convex slope, कहाँ पे हो रहा है सॉइल क्रीप? एट द टॉप. क्यों डेविस को चाहिए सॉइल क्रीप? बिकॉज इफ द लैंडस्लाइड इज ऑकरिंग तो फ्री स्क्रैप बनेगा, कॉन्वेक्स स्लोप नहीं बनेगा. इफ दिस एंटायर लैंडफॉर्म फॉल्स डाउन, एक तो कॉन्केव स्लोप बनेगा या फिर फ्री स्क्रैप बनेगा. हाँ, रेक्टिलिनियर भी नहीं. रेक्टिलिनियर तभी बनेगा व्हेन द रिवर इज इन द ग्रेडेड प्रोफाइल. What is a graded profile? Graded profile is a profile in which at any stage river का rate of erosion is matched by the rate of sediments. जितने sediments are created उतना removed by the river. That is what is the rectilinear slope. इसके forget now rectilinear slope. Just remember Davis में forget rectilinear slope. Davis में just remember convex to concave. कैसे आपको काटते जाना है. So you are having a cake, that is a mountain. You are having a छुरी, knife, that is a river. So पहले केक को कभी भी जब आप काटते हो तो कैसे काटते हो? ऐसे या V shaped valleys. Youthful stage. Why? Because the landform is of a greatest height.
Fine. As you keep on cutting the cake, you take always this bite of a cake, then the other part of the cake, other part of the cake. ऐसे अगर काटोगे तो obviously बचा हुआ cream won't be able to maintain that pressure and the cake will fall down. This is when the बचा हुआ cream है, that is the mature stage. Very simple Davis to understand. Penk is difficult. King, wood कुछ है नहीं. Wood को पूछा, wood ने क्या कहा? Free scrap becomes concave. कैसे बनेगा concave? He has no idea. उसने सिर्फ बोला free scrap is becoming concave. Fine? So just imagine कि आपके पास छुरी है, that is a river. You are first cutting a cake. You are never going to cut cake like this. You are never going to cut the cake straight. You are always going to cut the cake in V-shaped manner. Right? Once you cut the cake in the V-shaped manner, फिर over the period of time, as the height of the cake decreases, there is no chance कि you are going to cut in the V-shaped manner, then you are going to cut it in the normal manner. When इतना बड़ा cake अब इतना हो गया, how you are now going to eat it? Imagine, you are just going to take the big pieces. That is lateral erosion. पहले vertical erosion, फिर lateral erosion. मस्ट है, नहीं तो कैसे बनेगा रेक्टिलिनियर स्लोप? अगर अपलिफ्टमेंट है तो कॉन्वेक्स, अगर इरोजन ज्यादा है सेडिमेंट्स का, कॉन्केव. रेक्टिलिनियर कब होगा? ऊपर से कुछ टूटा, गिरा, उतना ही आपने निकाल दिया तो ही तो स्ट्रेट बनेगा रेक्टिलिनियर स्लोप. ऑलवेज नेसेसरी कंडीशन. डेविस केस में रेक्टिलिनियर स्लोप है ही नहीं. पेंक में जरूरी नहीं है. किंग में है, वुड में है रेक्टिलिनियर स्लोप. फाइन. इसलिए तो 1960s के बाद Young gave his theory in 1961 and that is the theory that has been used. उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम थियरी, जो कहेगा इट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर प्रोसेस कौन से रॉक्स. एंड यंग कहता है इन हिज ओन लैंग्वेज कि माई थियरी इज नथिंग बट माई थियरी इज पेंक इन अ सिंप्लीफाइड मैनर. फाइन. कौन मोर प्रैक्टिकल है सब में? पेंक. फाइन. क्यों लोग पेंक से डरते हैं? यू विल अंडरस्टैंड टुडे. वो तो कुछ भी नहीं था स्लोप रिप्लेसमेंट. तब तो हमने बहुत सिंपल कर दिया कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. अब देखना क्यों लोग पेंक से डरते हैं. दैट इज वाई कॉन्वेक्स स्लोप को कैसे वो बनाएगा? स्ट्रेट. स्ट्रेट को कैसे वो बनाएगा? कॉनकेव. ही विल से पैरेलल रिट्रीट विल ऑकर. क्या कहेगा वो? पैरेलल रिट्रीट विल ऑकर ऑन द फ्री स्क्रैप. द base will be free from the parallel retreat. Over the period of time, the base will increase. There will be no free scrap left, and then the base will keep on removing, and it is going to become concave. So, this process of initial parallel retreat and later increase of the base is slope replacement. डेविस के फॉलोअर्स को रखा कि यही parallel retreat है. Penck never talked about parallel retreat except in the first stage. Just making you familiar. You first take Davis. See, always remember, Davis is like a starter, जो सबको enjoy अच्छा लगता है. Fine. Penck is a main course. And King etc. क्या है? कभी कभी starter बहुत अच्छे लगे तो आप ये appetizers है. लेना है तो लो या मत लो. Fine. This is या वो sweet lime soda type. किंग एंड वुड. कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं. आज जितना हम किंग को क्रिटिसाइज करेंगे वो आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो. किंग ने कहीं भी अपनी इस थियरी अप्लाई नहीं की सिवाय उसके इमेजिनेशन. कहीं जाके देखा ही नहीं कि ये सच्चे में है या नहीं. फाइन. सो थियरी यूथफुल स्टेज. Youthful stage. Steep
concave slopes, convex slopes evolve due to vertical down cutting and weathering. Point number 2, you can take it जैसे आपको लगता है in the paragraph या point format. Second point, due to the vertical down cutting, slope angle, vertical down cutting से slope angle will increase or decrease. क्या होगा? If I try to vertically down cut, again a flat cake है, अब आपने vertically तोड़ा तो slope will be created या decrease होगा? केक है, दिस इज अ फ्लैट, इसके ऊपर कैंडल्स है, यू नाउ टेक अ वर्टिकल डाउन कटिंग, क्या करेंगे अब? स्लोप बना या डिक्रीज हुआ? बन गया स्लोप. इन द फ्लैट लैंडफॉर्म यू आर टेकिंग दैट. इमेजिन, ये मत सोचो कि केक के साइड्स, केक के अंदर क्या हो रहा है, स्लोप बन रहा है कि नहीं? देयर इज अ फ्लैट लैंड एंड नाउ बाय नाइफ यू कट इट, by river you cut, and V-shaped valleys means slope increase or slope decrease? Slope increases. कब होगा decrease slope? U-shaped valleys. Why you are thinking slope has decreased? Because you are thinking कि केक का end मतलब समंदर. We are not concerned about that end. We are concerned about a flat land, and उसके अंदर you are cutting it. Due to slope angle is increased. Full stop. एग्जाम में इतना सब याद नहीं रहेगा. एग्जाम में क्या करोगे आप? You already know the Davis का theory. In the youthful stage, landform development की theory, river has more energy, river has less energy. More energy. River will have more energy if the slope angle is steep, or if the slope angle is gentle. Steep. So in the slope development, forget river, just write about slope. Slope angle is increased. Very logical. How to approach? Vertical down cutting दोनों से हो रहा है. वहाँ पे you are saying कि the river has great energy, therefore it will transport, erode the sediments. यहाँ पे because it is slope development, you are saying कि slope angle has increased. But is it not the same logic? आगे landscape development में वो कहेगा because the slope angle has increased, river का speed will increase. Because the river का speed will increase, vertical erosion will give rise to V-shaped valleys. Getting it? Third point, soil creep is the most dominant form of weathering, full stop. Therefore weathered material is transported down the slope, full stop. The nature, rate and the magnitude, of denudation and transportation, मतलब weathering and erosion, denudation
and transportation depends upon the energy that is available in the youthful stage. Energy available exceeds the work to be done. मतलब energy available exceeds erosion and transportation. That is the work to be done, exceeds the work to be done, and hence sediments are quickly removed. Giving rise to underline इसके बाद convex V-shaped valleys. Giving rise to convex V-shaped valleys. Read again for 2 minutes and ask me if there is any doubt, because I have compressed it, so maybe some may find it bit difficult. But just imagine what is happening. Youthful stage में energy ज़्यादा है, therefore erosion ज़्यादा है तो V-shaped valleys. अब बीच में क्या घुसाना है? वेदरिंग कौन से होने वाली है? सॉइल क्रीप होने वाली है, बस. एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए एक दो भारी स्टेटमेंट, जैसे एनर्जी अवेलेबल इज एक्सीड्स द वर्क टू बी डन, खत्म. एंड लेट द स्टेटमेंट्स कम इन द एग्जाम. Yes, steepness is going to decide speed decides energy. Mature stage. Lateral erosion starts dominating. Though dominating, हमने ये नहीं किया lateral erosion is the only erosion. It starts dominating. So lateral erosion को we are comparing with which erosion? Vertical erosion. Lateral erosion starts dominating. The vertical erosion also causes डाउन वेस्टिंग, या ये टेक्निकल वर्ड है किसके लिए? डिक्रीज के लिए. डाउन वेस्टिंग मतलब डिक्रीज. क्यों डाउन वेस्टिंग? बिकॉज इन दिस स्लोप डिपेंड्स अपॉन वेदरिंग एंड मास मूवमेंट. व्हाट इज मास मूवमेंट? also known as mass wasting. Mass wasting is of two types: lateral and landslides. ये जो सब कुछ होता है that is downwards. So down wasting. Fine. जो material जो which has been broken has been moved downwards. Full stop. The down wasting
results in decrease of slope angle, results in decrease of a slope angle, इसमें क्या होगा? एनर्जी विल बी मोर, एनर्जी विल बी लेस, एनर्जी विल बी इक्वल मैच्योर स्टेज में. इफ यू आर सेइंग एनर्जी इज लेस, देन वाई ओल्ड एज की क्या जरूरत है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा स्पीड, यूथ. एनर्जी इक्वल्स eroded material, mature stage, and energy is very less, old age. So यहाँ पे what will be the energy? Equal. Because equal is the energy, कौन सा slope बनेगा? Rectilinear slope. Fine? So ऐसे जबरदस्ती डेविस लाएगा रेक्टिलिनियर स्लोप को, और फिर एनर्जी कम हो जाएगी इरोजन की, और कौन सा स्लोप बनेगा? कॉनकेव स्लोप. If you are asking me energy slow हो जाएगी, erosion कम होगा, and why there will be concave slope? Because vertical erosion कम हो रहा है. Understanding? Weathering कम नहीं हो रहा है. चलो कोई जरूरत नहीं उसकी. As the energy, next point, as the energy is energy required for erosion, the energy required for erosion matches the rate of erosion, matches the rate of erosion. A smooth graded, graded, graded profile is formed. Smooth graded profile is formed. You can write in the bracket honestly how the profile will be. If there is more erosion, concave. If the erosion equals, convex. If there is less erosion, convex, rectilinear, and concave. More erosion, V-shaped valleys. Balance, rectilinear slope. More sideways erosion, concave. More sideways erosion कब होगा? When energy is least. Getting it? Graded मतलब the name Davis used for rectilinear. Davis calls them as graded slopes. Have you read G.C. Leong? Have you seen G.C. Leong? In the G.C. Leong, you have one famous diagram in the fluvial landforms, जिसमें the hill is shown and then this diagram is shown like this. And उसके बाद दिया है what are the features of youth, mature and old age. This is what is the graded profile. Concave से लेके rectilinear and फिर convex से लेके rectilinear and then ultimately concave. This is what is the graded profile. A smooth curve below. Great Himalayas, Middle Himalayas, Shivaliks, Great Plains. I will call this also as a graded profile. This is how the landform goes on reducing in height. This is what is the graded profile. Next, old age. Old age. Lateral erosion and vertical erosion in the bracket में लिखना in the earlier stages.
in the earlier stages, bracket closed, has reduced the steepness of the land, reduces the steepness of the land, reduced the steepness of the land, full stop. Therefore, energy required is less. एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस. हमेशा जब हम एनर्जी की बात करते हैं याद रखना वर्टिकल इरोजन के लिए, नॉट लैटरल इरोजन. एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस. The next point, the lateral erosion continues. Full stop. Next point, as the time progresses, the sediments become finer. Full stop. Sediment thickness also increases. Because of deposition. Full stop. What has happened here? Lateral erosion ने हाइट ऑफ द माउंटेन्स को खत्म कर दिया. माउंटेन्स के ऊपर का पार्ट तो हवा में लटकेगा नहीं, वो आके गिरेगा नीचे. बिकॉज वो गिरेगा नीचे तो सेडिमेंट्स टूट के और फाइन हो जाएंगे. बिकॉज वो फाइन हो जाएंगे तो पानी में वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे. एंड जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो जाके डेल्टा में डिपॉजिट हो जाएंगे. And therefore thickness of the landform has increased. So sediments have become finer from Himalayas till the Great Plains. Jitna you come down from the Himalayas, what is the difference between Bhabar and Tarai region? Big rocks. Tarai, fine rocks. Bhabar near the foothills, mature stage. Tarai below the mountains, right? Old age. Now ye Tarai ka material will be removed. It will be removed, it will be deposited. Deposition के कारण the thickness of the sediments will be greater. ये आंसर में सब लिखना नहीं, समझो क्या हो रहा है. Because of the thickness of the sediments becoming greater, can I say the depth of the river from today onwards it will be also known as river channel. The depth of the river will be reduced. Because the depth of the river will be reduced, during the floods, the river का water will cross the channel, and during the rainy season such happens, and therefore we will call rainy season में there is floods. कहाँ पे rainfall ज़्यादा हो रहा है? In the higher parts of the Himalayas. कहाँ पे floods ज़्यादा आ रहे हैं? In Bihar and Assam, जहाँ पे there is old age. Why? Because if there is more rainfall in the higher part of the Himalayas, वहाँ पे floods नहीं होगा. What will be there? Landslides. Erosion है ज़्यादा. Floods will be always in the plains. Why? Because the depth of the river is less. Therefore, to reduce the flooding problem of Assam and Bihar, what should be done? Desilting. That is siltation. Silt or sediments have to be removed so that the river channel becomes deep. What one? Siltation, Kolkata port पे. Siltation, same यही process है. That is throughout the year. West Bengal. Therefore, Kolkata is not a natural port. Fine. Third, and thus the convex profile, last point, thus the convex profile of the youthful stage
convex profile of the youthful stage. Over the period of time, underline the word time. Over the period of time, gets converted into gentle concave surface. Is converted into gentle concave surface by decline in slope angles. By decline in slope angles. By decline in the slope angles. Understood the theory? बस आंसर को अलग बनाने के लिए what we have done, slope angles की बात की है. This is how the initial surface was. Don't consider this as a slope angle. Initial surface after upliftment. In the youthful stage क्या होगा? Mountains. Don't draw this diagram. First understand what we are doing here. ये पूरी theory का revision है. कैसे बना ये mountain? So this is the landform. ये माउंटेन अब बचा है. इनिशियल दिस वाज द सरफेस. कैसे बना ये लैंडफॉर्म? इनिशियली थ्रू वी शेप्ड वैलीज. Getting it now? This is what is known as an कट 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 करके यहाँ तक. In the mature stage, will the height of the mountain decrease? So I am drawing what will be the landform in the mature stage. Again using our shading. Red color का part is the landform. In the first stage there was V-shaped valley, V-shaped valley, V-shaped valley. Later on, V-shaped valley got converted by lateral erosion into U-shaped valley. क्या दिखा रहा है ये डायग्राम? Lateral erosion has started. अंडरस्टैंडिंग ये क्या है? पहले का फॉर्म ऑफ अ माउंटेन. यू शेप्ड वैली से वो और कम हो गया. मोनाडनॉक्स पेनेप्लेन, मोनाडनॉक्स पेनेप्लेन.
what is happening? Lateral erosion. V-shaped valleys, youthful stage. Understanding this figure, क्या हुआ है? V-shaped, then there is a U-shaped, and ultimately in the old age flat. So convex surface, rectilinear slope, and then concave slope. This is what is the Davis का theory. छुट्टी है आज? अच्छा, मैं बोला सैटरडे को किसी. बट वो साइकिल आनी ही चाहिए. साइकिल इज कंपलसरी. ये डायग्राम भी बना सकते हो. एग्जाम में क्या देखेंगे? आपका ये वी दिख रहा है कि नहीं, बस. बाकी कुछ नहीं देखते वो लोग. ये डायग्राम सब इसमें सेम लगते हैं. सिर्फ इसमें इनिशियल स्टेज में वी दिखना चाहिए.
Don't draw the other diagram. Which is this diagram of? Parallel retreat या slope replacement? ये किसका है? This one? This is parallel retreat. Initial, next, next, next और उसके बाद slope replacement. ये किसका है? Slope replacement. Convex is ultimately being replaced by concave. Initially the scrap goes behind and then concave slope grows. So this is parallel retreat. This is vertical down cutting. So in the examination, if you don't have time, just make sure that ये किसका है? डेविस. इनिशियल लैंडफॉर्म एंड फाइन. ये फर्क है तीनों के थियरीज में. वर्टिकल डाउन कटिंग, स्लोप रिप्लेसमेंट, पैरेलल रिट्रीट. डोंट ड्रॉ दिस आर नॉट टेक्निकली, अभी नहीं, बट एग्जाम में ये भी बना सकते हो आप. गेटिंग इट? जरूरी नहीं कि इतना बड़ा बनाना है. एग्जाम में अगर ये बनाना है क्रिटिकल एनालिसिस. सबसे पहले नेगेटिव्स विल राइट और ड्रॉबैक्स. The slope decline theory suffers. The slope decline theory suffers from the same problems of landform development, full stop. सब पॉइंट उसका, that is according to Penck, slopes
don't necessarily change like humans. Slopes don't necessarily change like humans. In evolutionary manner, slopes necessarily don't change like humans in the evolutionary manner. फुल स्टॉप. इसका क्या मीनिंग है? जरूरी नहीं ये यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज के इसमें हो जाएगा. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, फाइन. ह्यूमन बींग्स वी गो थ्रू द यूथ मैच्योर ओल्ड एज, लैंड फॉर्म्स डोंट चेंज. सेकेंड, upliftment and erosion goes simultaneously. Upliftment and erosion goes simultaneously. Full stop. On the other hand, this theory assumes, that rapid upliftment precedes erosion. Rapid upliftment precedes erosion. Third, for the theory to complete its entire cycle मतलब youth to old age, for the theory to complete entire cycle, it requires longer duration of crustal stability, which the recent theories such as plate tectonics, dynamic equilibrium, 2-3 नाम ही याद रखना. Dynamic equilibrium has proved is not possible. Conclusion, the strength of Davis lies not in the technicalities, but in the idea of time dependent development of the landforms, comma easy language, which opened the field for subsequent studies. कितने पेजेस हुए? The entire theory? 1.5 page. Understanding what conclusion we have written, इसके कारण subsequent studies हुई.
1890s के बाद 1924 में पेंक ने दिया, 1960s में वुड ने दिया, 1942 में यंग ने दिया, फिर स्टॉलर ने 1980s में दिया. अगर पेंक गलत थियरी नहीं देता तो इतने सारे साइंटिस्ट का करियर नहीं बनता. फाइन, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. एंड व्हाई, सॉरी, डेविस अगर गलत नहीं देता. एंड सेकेंडली, because his idea was so simple that people could understand his theory and then do the field testing. After doing the field testing, they realized कि नहीं, Davis made there is a time development. यहाँ पे the landforms don't develop with the time. That is what all we have concluded in the summary. Getting it? Can someone tell me what is the meaning of slope replacement in simple words? What is slope replacement? What happens in slope replacement? The original which slope? Convex or concave? Convex. Is decreased, increased? Decreased. And is replaced by concave slope from the top or base? Base. वही है slope replacement. बस इतना याद रखना. What is slope replacement? The basal concave slope is going to replace convex slope. अब वो कैसे करेगा वो हमें सीखना है. I am telling you the theory first. He says in the initial stage this is the slope A, B. This slope will engage, will see erosion and weathering, and because of the steepness all the weathered material will fall down and will be collected, and therefore the height of the slopes will decrease to CD. ऐसे बनेगा. क्या हो गया यहाँ पे? The eroded material has accumulated. Now, because it is still steep, again, this will come to D, and this will become, this will become E. What is happening here? All the materials that are eroded are getting accumulated at the bottom. यहाँ पे there is no eroded material. This material has got eroded at the bottom. This material has got eroded at the bottom. क्या हो रहा है? Relief, height of summit versus the height of valley is decreasing. Why? Because of यहाँ का टूट के यहाँ deposit हो रहा है. अगर मैं slope की बात करता हूँ, the slope has to be here also. So maybe in the position F, and यहाँ से भी the position F. यहाँ से भी slope is cutting. We are just drawing one part. यहाँ से भी the slope is cutting. So in the position F के बाद what is this red line? Red color. Eroded material, sediments. इसके बाद there is no slope left. Fine. This is the slope which has experienced maximum erosion. All these eroded materials are deposited here. What he will call this slope as? Bosch-Jungian gravity slope. Why? All the materials are falling down due to weathering and erosion. They are getting deposited here. Initially, the size of the sediments is great, big. Why? Because they have not been exposed for long time to the elements of weather. इसलिए the size of the sediments is bigger. आगे जाके they will be exposed to the elements of weather. अगर ये F and ये F, that is this summit and this summit touches, कुछ बचेगा? No. So क्या होगा? Height of the landform will go on declining. But the eroded material जो है, will this now break over the period of time due to the elements of weather? Yes.
Because they will be broken, valley में what is flowing? River. Will it be carried by the river? Yes. So in the next stage, because it is being carried by the river, will this become concave? Again, jitna material will be eroded by the river, it will be carried by. Will this start becoming concave? So जहाँ पे concavity develop होगा, what is the name of this slope? Gravity slope, wash slope. क्या बढ़ेगा अब? Sediments will keep on breaking because they have been exposed, because in this stage there was a stage of rapid upliftment, offstay gunde, glitch forming. यहाँ पे upliftment is matching erosion, glitch forming, end पे लूंगे. यहाँ पे the upliftment has stopped, so offstay gunde stage. Because the upliftment has stopped, up there will be only weathering from the top slopes. They will be deposited here. It will be removed by the river, and thus height of the landform will keep on decreasing, and ultimately explain how Bosch-Chungen and Hadel-Hangen gave rise to the concept of slope replacement. This was the question. So क्या बताना है आपको? How Bosch-Chungen forms, stage 1, and how Hadel-Hangen forms, stage 3. Proper Bosch-Chungen and Hadel-Hangen, stage 3. फिर due to upliftment stopping, what does not increase? Height does not increase. अब किसकी height decrease होती जाएगी फिर? Bosch-Chungen की. किसका area बढ़ते जाएगा? Hadel-Hangen का. That is sediments का. And वो sediments रहेंगे या river निकाल देगी? निकाल देगी. So उसको हम कहेंगे slope replacement. Getting it? Savindra Singh, you are also having Savindra Singh? Though I'll share this same pages tomorrow, and I'll ask you to read in the class itself. जिनके पास है, they can bring the book also tomorrow. 1, 2, 3, 4, 5. कितना 700-800 pages होंगे, words होंगे. Answer हमें कितने words में लिखना है? Maximum 250 words. इसको अब समझो क्या यूज करना है. ये डायग्राम यूज करना है, ये यूज करना है, या ये यूज करना है. दैट विल सी ओवर द, या कोई और डायग्राम यूज करना है. व्हाई कीप सो मेनी बुक्स ओपन? बिकॉज इससे ज्यादा हम ये डायग्राम यूज करेंगे. व्हाट इज हैपनिंग हियर? द सेम डायग्राम विच हैव मेड. उसको भी मैंने मॉडिफाई किया है. फाइन. Secondly, in the Savindra Singh part, they have given too many technicalities. Obviously, book है, technicalities देगा. We are not concerned with the too much of technicalities. उसमें से keywords identify करने, right? But yes, this is still the best book for hill slope development studies. Even better than the foreign authors. Foreign authors में ये concepts ही नहीं है. This is what is the slope replacement. What is the difference between Davis and Peng? Peng कहेगा it does not take place with the time, because endogenetic and exogenetic forces are acting the land simultaneously. In the first stage there is greater upliftment, landform development. हम आंसर लिख रहे हैं slope development में. In the first stage, because upliftment is greater, is the erosion also greater? Yes. So hill slopes में आंसर आ जाएगा. In the first stage there is more erosion, resulting into convex slope. In the second stage, deaccelerating rate of erosion, मतलब erosion is matching the upliftment or the sediment supply, rectilinear slope, and बाद में सिर्फ weathering solution, so concave slope. This is what is the good thing about the hill slope development model of Peng. You don't have to remember any of the German words. That is the good thing, because Peng never gave the hill slope development का model, क्योंकि तब तक Peng had died. His hill slope development का model comes from his model of landscape development. Right? उसने खुद ने कभी नहीं कहा ये ऐसे hill slopes होगा. उसका पूरा landscape development का model is only made up of slopes.
So it is the way of studying. You interpreting Indian Constitution, easy, landscape development. Supreme Court interpreting Indian Constitution, slope development. Fine? बस इसलिए दैट इज द डिफरेंस. अदरवाइज ना डेविस ने कुछ कभी स्लोप डेवलपमेंट के बारे में कहा था, ना पेंक ने कहा था. ये किसने इंटरप्रेट किया? किंग ने. फाइन? खुद की थियरी देने के लिए. इसलिए ये कंसेप्ट आया स्लोप डेवलपमेंट का. सो पेंक. Penck was one of the greatest geomorphologists of his times. Who was one of the greatest geomorphologists of his times. Did not agree with Davis. Did not agree with Davis. That uplift is complete before erosion. Uplift is complete before erosion. According to him, upliftment and erosion goes on simultaneously. Upliftment and erosion goes on simultaneously. फिर से वही चीज है जो हमने पहले लिखी है. Getting it? Full stop. Next point, when the upliftment is rapid, when the upliftment is rapid, क्या होगा? Will there be more down cutting by the streams? Yeah, there will be less down cutting by the streams. There will be more down cutting by the streams. When the upliftment is rapid, there will be more down cutting by the streams or more erosion by the streams. कुछ भी लिखो. More erosion by the streams, giving rise to giving rise to a convex profile. Giving rise to convex profile. Giving rise to convex profile. You can draw this diagram. Understanding what are these lines? क्या है ये? Hill. Upliftment rapid है, so hill is becoming convex, resulting into formation of gorges and canyons. But हम इस पूरे डायग्राम को, because we are doing the slopes, we are rubbing this part. So you can see ये base है mountain का, this is the top of mountain. Initial mountain A dash. Height of the mountain is decreasing B dash. Because the upliftment is greater, erosion is greater, and therefore in the C dash profile is becoming more and more concave.
You can draw 3, 2 या 4 lines. I have drawn here 4 lines. You can draw even 2. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने ड्रॉ किया उतना. Landscape is without slopes. Landscape मतलब जो final landform बनता है, that is landscape. Landform can be in the initial landform. So landscape is without the landform. Landscape मतलब क्या? जो आज का डिजाइन है, that is landscape. Landform will be initial. A dash is a landform. आज क्या present है? Maybe in certain region, D dash. So landscape is D dash. Landform is A dash. So landscape कैसे बना? By giving shape to the landforms. That is what landscape is without the landforms. Yes. Primer rump में there is no landform. क्या किया था हमने? Initially there is a flat concave surface known as primer rump. फिर वो uplift होगा. उसके बाद end rump बनेगा. So end rump and primer rump में there are no mountains. नहीं समझ में आया? यही आंसर बस. Flat concave surface which is not having any relief is either primer rump or end rump. So in the initial stage there is no landforms. There is just landscaping, up down. Landscaping मतलब क्या? लैंड को स्कल्प्ट करके कैसे बनाया है? किस में यूज होता है? लैंडस्केपिंग टर्मिनोलॉजी यूज होता है गार्डनिंग में, कि एक बैरन रीजन को आपने कैसे अच्छा गार्डन बना दिया. दैट इज लैंडस्केपिंग. So landscapes are initially also without landform and final stage में also it is without landform. Landform will be V-shaped valleys, meanders, U-shaped valleys, etc. ये है landforms. ये कैसे? डेविस कहता है यूथ मैच्योर ओल्ड एज से, ये कहता है रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन से. अंडरस्टैंडिंग द सिमिलैरिटीज टू द थियरीज. अगर यही लैंडस्केप रहता, had this way been doing the landscape evolution, cyclical development, हम इस स्टेज को कहते हैं ऑफस्टे गुंडे एंड पेटुलुंगे, जिसमें there is more upliftment and hence mountains are formed. यहाँ पे because we are doing the hill slopes, we are saying rapid upliftment, therefore erosion is greater and therefore convex profile. Fine. Next point. नहीं, upliftment is greater, therefore erosive capacity of the rivers is greater. Because the erosive capacity of the river is greater, river can cut the landforms resulting into convex slope. अब erosion will match the upliftment in the second stage, rectilinear. There will be no upliftment, concave. Obviously in this stage rate of upliftment is greater, therefore erosion is not matching the upliftment. When the point number 2, when the rivers are eroding at a constant rate, when the rivers are eroding at a constant rate, matlab upliftment is matching what? Erosion. Rivers are eroding at a constant rate. Rectilinear slope is formed.
rectilinear slope is formed. ये कौन सा स्टेज है उसका, उसकी थियरी का सेकंड या थर्ड जो हमने थियरी की है, विच इज दिस स्टेज, ग्लिच फॉर्मिगे. ग्लिच फॉर्मिगे का विच स्टेज, सेकंड स्टेज. दिस इज व्हाट इज द रेक्टिलिनियर स्लोप. ऑफस्टेगुंडे, ग्लिच फॉर्मिगे. ग्लिच फॉर्मिगे में इनिशियल में द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर, देन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट विल स्लो डाउन, and in the rate of upliftment will match the rate of erosion, and in the third sub part of the second stage it will slow down. जैसे ही वो स्लो डाउन करेगा तो कॉन्केव प्रोफाइल बनते जाएगा. कॉन्केव प्रोफाइल बनते ही बॉस्चुंगेन एंड हैडलहैंगन, एंड देन थर्ड में उस कॉन्केव प्रोफाइल को कैसे बढ़ाना है, दैट इज हैडलहैंगन को इंक्रीज करना है इन लेंथ. And third, when in the case of decreasing rate of upliftment, in the case of decreasing rate of upliftment, क्या होगा, there is no upliftment, so there will be only undercutting by the rivers. In the case of decreasing rate of upliftment, concave slopes will develop. Concave slopes will develop. Because the river will erode at much lesser speed, because the river will erode at much lesser speed. Much lesser speed. Because the river will erode at much lesser speed, it cannot take big sediments from the top. It will take only the fine sediments which are found at the bottom, and therefore obviously नीचे लिखो, this is how he divides. So I am using the Davis-Ka terminology for your understanding of Penck. Fine, पहले सुन लो. Shall I continue? Davis कहेगा youthful stage. Fine, erosion has totally stopped. Penck कहेगा in the youthful stage upliftment is greater. वो कहेगा वहाँ पे upliftment has stopped. Upliftment is greater इसलिए concave. Mature stage graded profile Davis कहेगा, Penck कहेगा upliftment is matching erosion, इसलिए rectilinear. यहाँ पे upliftment does not match the erosion, इसलिए concave.
फाइन. अगर ये डेविस होता तो दिस इज वी शेप्ड वैलीज, दिस ऑल्सो वी शेप्ड वैलीज, दिस इज यू शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज. आइडिया सबकी सेम है, सिर्फ the way of looking at the things are different. Fine. Theory. What we have written, the three things are assumptions. First, Penck assumes that there is an initial rock surface. Penck assumes that there is an initial rock surface, which is having uniform rate of weathering throughout, uniform rate of weathering. Did Penck talk about structure? नहीं. Can you see? उसने structure की बात ही नहीं की. उसने कहा weathering will be uniform, क्योंकि वो कहता है structure सब जगह same होगा. ये negative है Penck का. Uniform rate of weathering हो ही नहीं सकता. It depends upon the structure. The initial surface is steep. Full stop. There is a river at the foot of a slope. Next point. Initially, due to weathering of large particles or large sediments, क्या होगा? sediments, they are falling down. Due to weathering of the large sediments, the upper part of a slope undergoes parallel retreat. Underline the word parallel retreat. उसने पैरेलल रिट्रीट की इनडायरेक्टली बात की थी. उसने थियरी का नाम पैरेलल रिट्रीट नहीं दिया. उसने कहा, देखो डायग्राम्स में डिफरेंस देख रहे हो आप. इन द फर्स्ट स्टेज कैसे स्लोप नीचे नीचे आ रहा है, दैट इज व्हाट इज द पैरेलल रिट्रीट. फाइन. या थर्ड डायग्राम में देखो, ए डैश इट कम्स पैरेलल टू बी, सेम हाइट है. बी एंड सी आर द सेम हाइट. उसके बाद डी के बाद हाइट कम हो रही है. अगर मैं ई बनाता तो डी के नीचे, डी डैश के नीचे बनाता. एफ बनाता तो ई डैश के नीचे बनाता. बट ए डैश, बी डैश, सी डैश आर द at the same height. This is what is the slope is undergoing the parallel retreat. Getting it? Next point. Yes, parallel retreat. Thus the initial free face or cliff, कुछ भी लिखो, इनिशियल स्टीप फ्री फेस या क्लिफ, फ्री फेस और क्लिफ और स्टीप
face. Free face is always steep. Initial free face is replaced by young gentle slope, having steep upper part, ब्रैकेट में क्या, बॉस्चुंगेन और हैडल हैंग. बॉस्चुंगेन, अगर बॉस्चुंगेन नहीं याद रह रहा है तो स्टीप ग्रेविटी स्लोप, हैविंग स्टीप अपर पार्ट, ग्रेविटी स्लोप, and comparatively gentle lower part, ब्रैकेट में क्या, सॉरी, हैडल हैंग. हैडल हैंग और वॉश स्लोप. See, unlike the landscape development, we are not dividing it in the 3 stage. First stage में ही हमने क्या बता दिया, there is a formation of Boschungen, ऊपर का part and Hadelhanger, and draw this diagram. Draw this diagram. फिर मैं मार्किंग उसमें कराऊंगा. And tell me, do you understand the diagram along with what we have written? Initially there was a free face, उसके बाद the free face कम होते गया, parallel retreat से, parallel retreat is applicable only to the upper part. So ये initial surface था, ये ऐसे आया, sediments टूट के नीचे गिर गए, height कम हो गई, फिर ये यहाँ पे आया, sediments यहाँ गिर गए, फिर ये यहाँ पे आया, sediments यहाँ गिर गए,
फिर ये यहाँ पे आया, सेडिमेंट्स यहाँ गिर गए, एंड अल्टीमेटली दिस इज द टुडेज लैंडफॉर्म इन द यूथफुल स्टेज. सो फ्री फेस या कॉन्वेक्स, बीच में का रेक्टिलिनियर एंड कॉनकेव. In the original surface A dash A, लिखो मत, there is no basal slope, but in the last there is some part of the original slope remaining and there is also a new basal slope being formed. Understanding? Fine? Thus, as shown in the diagram above, the original slope AA dash AA dash has now two components. A, B at the base, understanding in the diagram, A, B at the base, ब्रैकेट में वॉश स्लोप, bracket closed, and B dash at the top. B dash at the top. Bracket में which slope? Gravity slope. Original slope A dash has now two components. यहाँ पे आया original slope, it has now two components. Wash slope, gravity slope. ऊपर से, हमेशा वेदरिंग ऊपर से, जितना स्टीप है इसलिए वेदरिंग स्टार्ट हुई. वेदरिंग यहां से शुरू हो गई, वेदरिंग यहां से शुरू हुई इसलिए ये स्लोप जो था इधर आ गया. फाइन, इस स्लोप के सेडिमेंट्स गिर के यहां हो गए, फिर से ऊपर की वेदरिंग हुई, स्टीप था इसलिए यहां आ गया, सेडिमेंट्स यहां गिर गए. देखो हाइट कम होते जा रही है. वेदरिंग तो हमेशा ऊपर से होगी. पेंग कहेगा ऊपर से वेदरिंग होने के कारण स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा है. देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है उसने, देयर इज अ रिवर विच इज फ्लोइंग एट द बॉटम. आगे की थियोरी समझो, कहेगा अब ये सेडिमेंट्स गिर के रिवर के अंदर टूट जाएंगे, टूट के, देखो नो, इसको चेंज करो थोड़ा डायग्राम को, टूट के जैसे ये सेडिमेंट्स गिरेंगे अब ये स्लोप कॉनकेव होते जाएगा, ये स्लोप कॉनकेव होते जाएगा.
स्लोप रिप्लेसमेंट, इसको कहेंगे स्लोप रिप्लेसमेंट। वेदरिंग तो हमेशा ऊपर होगी जो स्टीप पे, वेदरिंग कहां पे हो रही है उसका टेंशन मत लो, कैसे स्टीप से लो एंगल बन रहा है उसको सोचो। देखो इट इज सेम, डेविस कहेगा ऊपर से कट के वी शेप्ड वैलीज, यह कहेगा ऊपर से नहीं कट रहा है, ऊपर से कट के यहां गिर रहा है और ये स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको कहेगा स्लोप रिप्लेसमेंट। बेसिक लैंडफॉर्म वही बनेगा चाहे कोई भी प्रोसेस होने दो। ऊपर से कैसे स्लोप नीचे आए, वेदरिंग जितनी ऊपर होगी उतना सेडिमेंट्स नीचे गिरेंगे, जितने सेडिमेंट्स नीचे गिरेंगे उतना द हाइट ऑफ द सेडिमेंट्स विल इंक्रीज, थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्स विल इंक्रीज एंड द हाइट ऑफ द स्लोप विल डिक्रीज। जितना ज्यादा इसका वेदरिंग होगा इसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी, जितना ज्यादा वेदरिंग होगा द सेडिमेंट्स का थिकनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन पे, इसीलिए पेंक इज मोर राइट। डेविस कहेगा कि अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है, अब पेंक कहेगा नहीं अपलिफ्टमेंट हो रहा है। पहले अपलिफ्टमेंट ज्यादा है तो ज्यादा वेदरिंग, अब अपलिफ्टमेंट रुक गया तो ऊपर वेदरिंग नहीं होगी, अब रिवर्स इस सेडिमेंट्स को निकाल देगी, इसलिए रिवर्स इज डूइंग मोर इरोजन, वेदरिंग नीचे, रिवर्स सेडिमेंट, तो ये स्लोप कॉनकेव बनते जाएगा। जब ये दोनों पार्ट मिट हो जाएंगे, बॉस-चुंगेन विल मीट हैडलैंगेन, फिर द हाइट ऑफ द माउंटेन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन द next stage. Subsequently, the new face B dash. Subsequently, the new face B dash will retreat, दिख रहा है डायग्राम में, इट इज गोइंग टू रिट्रीट, बी डैश इस पोजीशन में आएगा, फिर इस पोजीशन में आएगा, एंड द हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म्स और हाइट ऑफ द स्लोप goes on decreasing. Height of the slope goes on decreasing. As the upliftment matches the erosion by the river, as the upliftment matches the erosion of a river, a uniform rectilinear slope is formed. Uniform rectilinear slope is formed. Next point. In the third phase, due to the lack of upliftment, due to the lack of upliftment, concave profile starts forming. Over the period of time, कैसे concave profile ये हम लिख रहे हैं अभी. Over the period of time, the debris, TBRIS, debris या sediments, जो आपको easy लिखता है लिखो, debris और sediments will become fine,
this finer sediments will be removed by the river, giving rise to the concave profile, removed by the river, giving rise to the concave profile. Full stop. Tell me, have you understood? अब अपलिफ्टमेंट रुक गया है या चल रहा है? रुक गया है. सो क्या होगा? अभी सिर्फ सेडिमेंट्स फाइन होते जाएंगे. सेडिमेंट्स फाइन होते जाएंगे तो कौन सा स्लोप बढ़ते जाएगा? कॉनकेव. एंड किसको रिप्लेस करेगा? कॉन्वेक्स को. इसलिए उसकी थियरी इज स्लोप रिप्लेसमेंट. गेटिंग इट? रेक्टिलिनियर स्लोप यहां तक बन गया. अंडरस्टूड एवरीवन? अब अपलिफ्टमेंट हैज स्टॉप्ड, सो बेसल कॉन्केविटी फाइन. बेसल कॉन्केविटी, वाटर, ये अगर दूसरा पार्ट ऑफ द माउंटेन है, ये दूसरा पार्ट ऑफ द माउंटेन है, जैसे कॉन्केविटी एक्सटेंड होगी विल द हाइट ऑफ अ माउंटेन रिड्यूस, राइट? सो अब बेसल कॉन्केविटी, height of the mountain reduces, basal concavity, height of the mountain reduces, and thus entire profile will become concave because lower basal slope जो पहले नहीं था is formed and धीरे धीरे it replaces the upper slope. इसलिए slope replacement. Getting it? इसलिए इस theory slope replacement. So पेंग देखता है नीचे से ऊपर की तरफ, डेविस देखता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए वर्टिकल डाउन कटिंग. With the progress of time, इसमें टाइम मत अंडरलाइन करो गलती से, फाइन. With the progress of time, obviously with the progress of time ही होगा, but वो डेविस वाला टाइम नहीं है, ये स्टेजेस वाला. With the progress of time, the height of water divide, will be reduced because Hadal hang, HADELHANG, Hadal hang or wash slope will increase replacing Boschungen, BOSCHUNGEN. Boschungen और ब्रैकेट में ग्रेविटी स्लोप. Full stop. This process by which initial convex slope is replaced from below. Underline the word from below.
initial convex slope is replaced from below by gentler concave slope, is known as slope replacement. 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 See, now the only thing you have to do is, मैंने जो डायग्राम्स बाद में दिए हैं वो कहीं तो बीच में फिट करो, कभी आंसर के बाद डायग्राम्स मत आने दो. क्लास में हमेशा डायग्राम्स बाद में आते हैं बिकॉज वो समझाते समझाते बाद में आ जाते हैं. इन द एग्जामिनेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो डायग्राम पहले डालो, नॉट एट द एंड. क्या है ये रेड कलर? इट इज नॉट, इट इज नथिंग बट एंड रम्फ. प्राइमर रम्फ is converted into end rump. So end rump में there are pointed hills known as Inselberg. So I am drawing what the diagram I have drawn. A, F dash, दूसरा part. Fine. ये कैसे बना? Initially by slope replacement. Getting it?
चॉइस इज योर्स, कुछ भी बनाओ, कोई भी एक डायग्राम बनाओ. समझ में आया डायग्राम क्या है? इनिशियली पैरेलल रिट्रीट, देन स्लोप रिप्लेसमेंट. अब समझ में आएगा. 1 2 3 4 5 6 7. In this 6 stages, how the landform has been. 6 stages नहीं, ये we have shown the numbers. आज घर पे जाके फिर से रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना, या फिर चला जाएगा ऊपर से. राइट. Can you see in 3 and 4 रेक्टिलिनियर स्लोप है, 5 से कॉनकेव स्लोप बन रहा है. नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओगे तो डेविस लगेगा. Now 2012 का क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बॉस-चुंगेन एंड हैडल-हैंगन gave rise to slope replacement. कुछ नहीं, you have to just write Penke theory. इंसेलबर्ग मोनाड-नॉक्स लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द लैंड फॉर्म, वी आर डूइंग जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप. Even this diagram is very easy. A dash finally gives rise to A F dash. Getting it? Evolution, that is critical analysis.
क्रिटिकल एनालिसिस से पहले केस स्टडी as per Savindra Singh, mention the name of thinkers. Peng's theory applies to the practical situations of peninsular plateau. To the practical situations of the peninsular plateau. In the Bhander Plateau, MP, the process of slope replacement, has given rise to a region of steep, of pointed hills, which are similar to Inselbergs. Pointed hills which are similar to Inselbergs. Pointed hills which are similar to Hinselbergs. Had the hills been round, तो हम ये केस स्टडी किस में लिखते हैं? डेविस में. Right? So I'll stop here. We'll meet tomorrow. Understood this, everyone? हाँ, अच्छा मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, पकड़ लूँगा आज. Those who have submitted the test paper can collect today from the office.